पढ़ा था, राइट। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर हमारे पास 3 तरह की फर्दर सब डिविजन थी। आज डेजर्ट टाइप क्लाइमेट्स पढ़ेंगे। तो वी विल बी यूजिंग द सेम रिसोर्सेस जो PMFIS वाले हैं, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड कि NCERT में ये एट लेंथ डिस्कस नहीं है, तो लेट्स डू इट वंस एंड फॉर ऑल। एक बार ही ढंग से कर लो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, सो कमिंग टू डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। तो डेजर्ट बेसिकली होता किस वजह से, व्हाई देयर इज अ डिजर्टिफिकेशन, व्हाई अ पर्टिकुलर एरिया बिकम्स अ डेजर्ट। तो रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल। इवेपोरेशन ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है। मतलब बारिश उतनी नहीं हो रही जितना पानी इवेपोरेट होकर निकलता चला जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट देयर इज डेजर्ट। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। आइदर देयर विल बी हॉट डेजर्ट्स, तो जहां पे जिसको आप डेजर्ट बोलते हैं आम भाषा में, रेगिस्तान, या सो सहारन टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी देयर। और देयर आर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स व्हिच आर कोल्ड डेजर्ट्स आल्सो, लाइक गोबी डेजर्ट। या मिड लैटिट्यूड के अंदर मतलब क्या, टेम्परेट एरिया के अंदर। सो हॉट डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, लेट्स सी। So the aridity, that means the dryness of the desert, is mainly due to the effect of offshore trade winds, and hence they are also called as trade wind deserts. कहने का मतलब विंड जो है वो कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ ब्लो करती है, ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ नहीं कर रही। जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून पूरा अरेबियन सी पार करके आ रहा है आपके पास एक विंड, तो उसमें मॉइस्चर है, और वो मॉइस्चर एज अ प्रेसिपिटेशन इंडिया में शेड करेगा, रेनफॉल होगा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट से बाहर की तरफ विंड जा रही है तो उसमें तो कोई मॉइस्चर भी नहीं है, और वो कहाँ ही शेड करेगा। सो द मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। आमतौर पे जब आप नेक्स्ट पेज पे अभी देखेंगे तो ये है वेस्टर्न कोस्ट, अगेन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्ट। ज्यादातर आपको डेजर्ट्स, मेजर डेजर्ट्स विल बी इन दी वेस्टर्न कोस्ट। जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं उनका कारण और है, गोबी डेजर्ट का भी देखेंगे अभी, ठीक है। देन लेट्स read further. So that's between 15 degree and 30 degree north and south latitude. इक्वेटर के आसपास भी नहीं मिल रहा है ज्यादा, ठीक है। ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के बिल्कुल पास में कोई भी डेजर्ट नहीं है। हालांकि सन वहां पे काफी है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में आपको ज्यादा डेजर्ट्स मिलेंगे। अभी देखिए इसका कारण क्या है। So they include the biggest, for example, the Sahara Desert, which is 3.5 million square miles. So this is the biggest desert right here, Saharan Desert. ये इसको अपने आप एक क्लाइमेट टाइप भी मिला हुआ है, सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे ऊपर आपने लिखा है और डेजर्ट ऑफ सहारा टाइप, ओके। देन देयर इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, कलहारी एंड नामेब। तो ये मेजर डेजर्ट्स हैं, इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। So in the North America, you got the Great Basin, Mojave, Sonoran, and Chihuahuan deserts. And in the South American aspect, you got the Peruvian desert, Atacama Desert, which is the driest place in the world. मतलब rainfall सबसे कम होता है यहाँ पे. Then there is the Patagonian desert, Kalahari in Africa, Sahara in Africa. You got Thar Desert. This is in India. Okay. So ऊपर गोबी डेजर्ट मेन है और नीचे गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड सिम्पसन, ये 3 लेक्स हैं छोटी छोटी, और ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोल देते हैं। सो यही लोकेशंस जो हैं नीचे एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। इसमें से याद रखने वाला फैक्ट क्या है, द Atacama और द Peruvian desert is the driest of all deserts with less than 2 centimeter of rainfall annually. सो कारण क्या है, 2 कारण है, एक तो रेन शैडो इफेक्ट, दूसरा ऑफशोर ट्रेड विंड्स। रेन शैडो इफेक्ट मतलब इधर हमारे पास कौन से माउंटेन्स हैं, पर रॉकीज, नीचे एंडीज, ठीक है। तो ये एंडीज के रेन शैडो इफेक्ट में लीवर्ड साइड में आ जाता है, तो जो भी बारिश होना दूसरी तरफ ही हो जाएगा, इधर नहीं पहुंचेगा। फिर दूसरा, जो विंड चलती है वो ऑफशोर चलती है, मतलब दैट इज गोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, so therefore again nothing much happening. Okay, so this is the situation. Andes mountain chain hai, prevailing wind is going in this direction, it is under the flow of easterlies. Okay, and नीचे यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ खास यहाँ पे बारिश होने के चांस ही नहीं है। ओके,
Now mid latitude desert climate, जो गोबी डेजर्ट चाइना टाइप उधर कैसा है? So the temperate deserts are rainless because of either the continentality or the rain shadow effect. दो कारणों से rainless होता है. Continentality का मतलब है कि जब यहाँ से हमारे पास moisture bearing winds आएंगी, वो यहाँ तक आते आते पूरा अपना moisture shed कर देंगे इस रीजन के अंदर. बारिश हो चुकी. अब now there are dry winds which are moving in this particular area. तो यहाँ पे इस वजह से कोई भी ऐसी wind नहीं है जो बारिश क्रिएट करे. ठीक है, इधर से आएंगी तो इधर अपना मॉइस्चर शेड कर देंगे, आगे यहाँ तक आते आते फिर ड्राई विंड्स. तो दोनों तरफ आपको पूरा ये डेजर्ट बीच में कॉन्टिनेंटैलिटी मिलेगा. जो रेन शैडो इफेक्ट है वो वही है कि माउंटेन होगा बीच में, तो उधर माउंटेन के वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल पीछे ही हो जाएगा, तो लीवर्ड साइड में कोई रेनफॉल नहीं होगा. तो गोबी डेजर्ट के फॉर्म होने का कारण है कॉन्टिनेंटैलिटी, जो ऊपर आपने देखा. पैटागोनियन डेजर्ट इज ड्यू टू द रेन शैडो इफेक्ट बिकॉज ऑफ द एंडीज माउंटेन. So this is the Patagonian desert right here. So that's the rain shadow effect of the Andes mountain chain. इस तरफ बारिश करेगा, इधर खाली. Then among the mid-latitude deserts, many are found on the plateau and are at a considerable distance from the sea. These are Ladakh, the Kaizelkum, Turkestan, Taklimikan, Gobi Desert. So many are there. Okay. So ये सारों का रीजन वही है, सेंट्रल एशिया के अंदर यहाँ पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे. ठीक है, रब अल खली, सीरियन डेजर्ट, दश्ते कबीर, दश्ते लुत, तो ये सारे छोटे छोटे डेजर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, देन द पैटागोनियन डेजर्ट इज मोर ड्यू टू रेन शैडो पोजीशन ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द लॉफ्टी एंडीज देन द कॉन्टिनेंटैलिटी. ठीक है, वो तो हमें मालूम है क्योंकि कॉन्टिनेंटैलिटी का तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है. इधर से अगर विंड प्रिवेलिंग होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 40 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे छोटा सा 40 लिखा नजर आ रहा होगा आपको. So 40 डिग्री लैटिट्यूड पे वेस्टर्लीज चलते हैं मेजरली, तो विंड इज दिस वे, प्रिवेलिंग विंड. इस वजह से एंडीज जो है वो ब्लॉक कर देंगे और बारिश सब दूसरी तरफ ही होगा. That's why this is the Patagonian shadow region and that's why the Patagonian desert comes here. Okay? चलिए, अब डेजर्ट क्लाइमेट है कैसा? डेजर्ट क्लाइमेट में बेसिक एक फैक्ट याद रखना है, रेनफॉल विल बी लेस देन 25 सेंटीमीटर. Atacama आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, इट्स द ड्राइएस्ट प्लेस. There is practically no rain at all. Less than 2 centimeter means nothing. So rain normally occurs as a violent thunderstorm of the convectional type. कभी कभी जो moisture इधर उधर से उड़ के आया, ऊपर गया और फिर precipitate एकदम से करेगा. That's the convectional type. That's called the bursts. So it bursts suddenly and pours continuously for a few hours over a small area. It's not well distributed and then finishes off. The thunderstorm is so violent and comes so suddenly that it has disastrous consequences on the desert landform, basically flash floods. Okay, so अब means का एक question है, major hot deserts in northern hemisphere are located between 20 to 30 degree north and on the western side of the continent. Why? इसका कारण क्या है? तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी कि कारण क्या है. दो मेन कारण आपने ऑलरेडी पढ़ लिए कि या तो वो ऑफशोर विंड ब्लोइंग होगा या कॉन्टिनेंटैलिटी होगा, है ना, और या फिर वो लीवर्ड साइड में किसी भी एक माउंटेन रेंज के प्लेस्ड होगा. एक कारण और है कोल्ड करंट्स. अगर कोल्ड ओशन करंट इस तरह से फ्लो कर रहा हो पास में से, जैसे यहाँ पे पेरुवियन करंट है, वेनेजुएला करंट है, कैनेरीज करंट है और कैलिफोर्नियन करंट है, ये कोल्ड ओशन करंट्स. सिमिलरली द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, they are basically coming from the polar region, that's why they are cold. Okay, so cold ocean current भी क्या करेगा, इधर cold create करेगा temperature और यहाँ पे land will be hot. So the area where it is hot, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे high pressure होगा and यहाँ पे low pressure होगा. ऐसा ही होना चाहिए ना. Continentality की वजह से the land will get heated and this area will be cold. The water is cold. So what is the situation here? जैसे पेरुवियन करंट में भी हम बोलते हैं. What is the situation here in the Peruvian region also? Is this a high pressure zone or a low pressure zone? High pressure zone, no? Hello, hello. Yes, sir. Yes. And the area wind here is moving in this direction. Easterlies के effect में.
इधर भी ईस्टर्लीज के इफेक्ट में, तो वॉकर सेल सर्कुलेशन बनती है, बारिश यहाँ हो रहा है इस जगह पे। हमने पढ़ा था एल नीनो, ला नीना, उस टाइम पे पढ़ा था ना कि बारिश जो है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस जगह पे कोई खास बारिश नहीं हो रही। तो दिस इज द हाई प्रेशर एंड दिस इज द लो प्रेशर एरिया एट दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इधर वार्म करंट्स हैं। तो इस वजह से the continuous rainfall is away from this places and it's not happening towards this places. इस वजह से वॉकर सेल जो है वो दूसरी तरफ को बन रहा है, बारिश इस तरफ से जा रही है बेसिकली, इट्स हैपनिंग ऑन दिस साइड, not on this side. Okay. So let's see. So the hot deserts lie along the hot latitudes or the subtropical high pressure belts, where the air is descending, a condition least favorable for precipitation of any kind to take place. So anticyclonic सा movement है. The rain-bearing trade winds blow offshore and westerlies that are onshore blow outside the desert limits. जो थोड़ी बहुत वेस्टर्लीज आती भी हैं तो बीच में कोई ना कोई एंडीज माउंटेन्स आगे कुछ आगे तो फिर डेजर्ट लिमिट में नहीं आ रही. Then whatever winds reach the desert blow from cooler to warmer regions and their relative humidity is lowered, making condensation almost impossible. There is scarcely any cloud in the continuous blue sky. The relative humidity is extremely low, decreasing from 60% in coastal areas to less than 30% in the desert interior. Under such conditions, every bit of moisture is evaporated and the desert thus is a region of the permanent drought. Precipitation is both scarce and most unreliable. On the western coast, the presence of cold currents gives rise to mists and fogs by chilling the oncoming air. तो जो ऑफशोर विंड ब्लो हो भी रही थी वो बेसिकली कूल डाउन होगा यहाँ पे आके एकदम से. So उस टाइम पे it will be creating a mist or fog. So the air is later warmed by contact with the hot land and little rain falls. The desiccating effect of the cold Peruvian current along this border right here along the Chilean coast is so pronounced that mean annual rainfall of the Atacama Desert is not more than 1.3 centimeter. जो थोड़ा बहुत रेनफॉल है भी वो भी कोस्ट पे ही हो रहा है, Atacama Desert के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में. Yeah, so that's why nothing much is happening in the Atacama Desert at all as far as the rainfall is concerned. Then temperature of the hot deserts कितना चला जाता है maximum? So highest is at Al Azizia in Libya, 57.77 degrees Celsius. That's where the air conditions don't work. Okay. So the reason for the high temperature is obvious. क्या क्या reasons होते हैं अब यहाँ पे तो obvious हैं लेकिन पेपर में वो पूछते हैं which of the following can be the reasons for high temperature at a particular place. So they will not mention deserts at that point of time. तो पहला तो clear cloudless sky, intense insolation, ड्राई एयर एंड रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटेंस टेम्परेचर्स क्रिएट होते हैं. ठीक है. देन कोस्टल डेजर्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मैरिटाइम इन्फ्लुएंस एंड द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड करंट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर. कोस्टल एरिया में बिल्कुल थोड़ा सा कंपैरेटिवली शांति रहेगी, बिल्कुल पेरुवियन करंट के आसपास. ठीक है. Then the desert interior, however, experiences much higher summer temperatures and winter months are rather cold. The diurnal range of temperature is very great. Intense isolation by the day in the region of dry air and no clouds causes the temperature to rise in the sun. But जैसे ही सनसेट होगा साथ ही टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे भी जाएगा क्योंकि क्लियर स्काइज हैं तो रेडिएट करना भी आसान है. क्लाउड तो हीट ट्रैप करते हैं ना, तो यहाँ पे वो वाला फैक्टर मिसिंग है. तो देखिए हाई डायurnal रेंज और टेम्परेचर रेंज इज अ टिपिकल फीचर ऑफ हॉट डेजर्ट्स. मतलब सुबह और शाम के या दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत गैप होगा. इट कैन बी अप टू 14 to 25 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो. फ्रॉस्ट में इवन अकर एट नाइट इन विंटर. राजस्थान में भी जैसे रात के टाइम बहुत ठंड हो जाती है और दिन के टाइम पे पूरी गर्मी रहेगी, 45-50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा. या रात को इट विल बी अगेन कंफर्टेबल टू 25-30. दैट्स द सिचुएशन. Now, climatic conditions in the mid-latitude deserts. So they are cut off from the rain-bearing winds. That's the main aspect. The annual range of temperature is much greater than that of the hot deserts. Continentality accounts for these extremes in temperature. तो यहाँ पे जो
टेम्परेट डेजर्ट्स हैं एक तरह से, तो वहां पे कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से एक्सट्रीम्स हैं। ओके, डेजर्ट वेजिटेशन किस तरह का होता है? तो प्रिडोमिनेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड एज जीरोफाइटिक और ड्राउट रेजिस्टेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। हमने इससे पहले एक और ऐसे एक प्लांट पढ़े एपीफाइट्स, वो क्या होते हैं? कल की क्लास में आए थे एपीफाइट्स। कौन बताएगा? So they are the plants that grow upon another plants. They are epiphytes. जो ऐसे जैसे आपके घर में कोई बेल लगी होगी, मनी प्लांट और दे कैन बी बोगनविला, सो वो इस तरह से ऊपर ऊपर क्रॉल कर करके दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो दे आर एपीफाइट्स, या दैट्स द वे दे सर्वाइव। कहाँ पे होते हैं एपीफाइट्स? कल पढ़ा था। कौन सी फॉरेस्ट में मिलेंगे? इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट, याद है कि डेंस कैनोपी है, तो दे विल फाइट फॉर सनलाइट एंड दैट्स हाउ द एपीफाइट्स विल ग्रो। ठीक है, पढ़ा करो दोबारा दोबारा निकाल के। अभी सिलेबस कम है, जितना जल्दी जल्दी रोज रोज रिवाइज करोगे उतना याद रहेगा। ओके, सो दिस इंक्लूड्स कैक्टाई, thorny bushes, long-rooted wiry grass, and scattered dwarf acacias. So trees are rare except where there is abundant groundwater to support the cluster of date palms. तो बस ये इस तरह की vegetation है. Okay, now most of the desert shrubs have long roots and are well spaced out to gather moisture. Plants have few or no leaves and the foliage is either waxy, leathery, hairy or needle shaped to reduce the loss of water through transpiration. Basically पानी conserve करना चाहते हैं plants, उसी तरह से mold हो रखे. So they have thick, tough skins. You can think of aloe vera, you can think of cactus. That's how desert plantation is. So अब कौन-कौन से tribes कहाँ-कहाँ पे हैं? So there is the Bedouin Arabs, so they are in Arabia. Tuaregs are in Sahara. Then there are Gobi Mongols in the Gobi Desert. Bushmen in Kalahari, they are famous and they are primitive hunter-gatherers. Then there is Bindibu in Australia, so they are again primitive hunters and gatherers. इसमें से ज्यादातर nomadic herdsmen और hunter gatherer ही kalahari और के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको hunter gatherer ज्यादा मिलेंगे. ओके, सेटल्ड कल्टीवेटर्स तो यहाँ कहाँ मिलेंगे डेजर्ट एरिया के अंदर? देखिए, सो डेजर्ट कल्टीवेटर्स रिलाई अपॉन इंडस इन पाकिस्तान, टिग्रिस यूफ्रेटिस इन इराक, कोलोराडो इन इंपीरियल वैली ऑफ कैलिफोर्निया. सो सिर्फ तीन ही जगह पे जहाँ पे हमारे पास रिवर्स हैं, उधर उधर आपको इस तरह से कुछ ना कुछ सेटल्ड कल्टीवेटर्स मिलेंगे. The life-giving waters of Nile made it possible for Egyptians to raise many crops as early as 5,000 years ago. So Nile के आसपास भी हमारे पास है. ठीक है. Then there is a Tafilith oasis in Morocco. So 5,000 square miles का यहाँ पे settlement है because of the oasis. तो जहाँ पे पानी मिल जाए, so that's great. वहाँ पे आसपास settlement बन जाती. A wall is usually constructed around the oasis to keep out the violent dust storms called as simmums. तो अब prelims का एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि violent dust storms in desert areas are called as simmums. Okay. Then mining settlers. तो desert region में जहां जहां पे आपको कुछ ना कुछ natural minerals मिलेंगे, उधर भी settlements हैं. For example, gold. So ये बहुत सारे immigrants को Great Australian Desert में आज भी gold लेके जाता है. Then there is Kalgoorlie and Coolgardie. So these are the two main, Australian towns with gold mining. Then Kalahari Desert is known for discovery of diamonds and copper. Then even in Atacama Desert, so there is cemented gravel from which sodium nitrate, which is a valuable fertilizer, is extracted and exported to all the parts of the world. So यहाँ पे भी mining camps हैं. Then besides nitrate, copper is also mined, and very difficult name to pronounce, Chuquicamata. Okay, this is the world's largest copper town, Chuquicamata. Okay, so that's that. हमारे पास essentially in deserts के अंदर main ये area है. बाकी oil and natural gas तो आपको मालूम ही है.
So discovery of oil in many parts of Saharan and Arabian deserts have transformed this forgotten part of the globe. So Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Algeria, everywhere. So they are important oil producing desert countries. Once the oil was discovered, within 10 to 20 years, they are no less than developed countries because they are selling oil, making money like anything. Kuwaiti dinar is about 400 rupees to one Kuwaiti dinar. That's the kind of value that it holds. So even dollar has to be like $4 or $5 for one Kuwaiti dinar. That's the situation. So इस वजह से काफी अच्छा चल रहा है उनका अभी. ठीक है. Then next, as far as the desert vegetation is concerned, that's it for us. Next is the steppe climate or the temperate continental climate or temperate grassland climate. The steppe is a kind of grassland. You can look at it. This is the kind of grass that it is. Okay. So now where is it? So it is in the interiors of the continents. They lie in the westerly wind belt, which is in mid latitude on temperate region. So grassland is practically treeless. कहीं पे भी एक पेड़ नजर नहीं आएगा, सब grass ही grass है. Due to continentality, deep within the interiors, the continents where the rain-bearing winds don't reach. In Eurasia, they are called steppes and stretch eastward from the shore of the Black Sea to the foothills of the Altai Mountains. So 2000 miles long belt is there, that is steppes. Okay. So अलग-अलग तरह के हमारे पास grassland है और उनका अलग-अलग region है. Prelims में एक सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा grassland कहाँ पे, ठीक है? So see, pustas, so this is in Hungary and surrounding areas. Prairies, they are in North America. Pampas, they are in Argentina and Uruguay, South America. Then bushveld, so they are in North, South Africa. Highveld, so they are in South Africa, Southern South Africa. Downs, so they are in Australia. Down under, ऐसे भी याद रख लेते. Then there is Canterbury, this is in New Zealand. So these are the main grasslands of the world. Okay. So that's that. So savanna type, यहाँ पे तो इधर कौन-कौन से grassland है? So there is Llanos, Campos, Sudan, South African veld and Australian. So यहाँ सब जगह पे savanna type of climate रहेगा और grassland रहेंगे. Then there is prairies. तो prairies में भी कुछ अलग-अलग जगह पे prairies है. Steppe, so the Great Plains of North America, Kyrgyz steppe, Australian and so on. सिर्फ सवाना की जो टाइप्स है ना फर्दर, जैसे लानोस ऑफ ऑर्निको, काम्पोस इन ब्राजील. ये लानोस और काम्पोस याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं. ठीक है. अब स्टेppe क्लाइमेट है कैसा? सो दिस इज कॉन्टिनेंटल विद एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. So it varies greatly between summer and winter. Summers are hot, winters are very cold. Summers are very warm, so they are at over 18 to 20 degrees Celsius. And steppe type of climate in the southern hemisphere is never severe. Why? Because there is a lot of ocean aspect here. तो wind की वजह से वो severe temperatures नहीं होते. यहाँ पे wind speed बहुत ज़्यादा है. ठीक है. Then precipitation. So general precipitation is between 25 to 75 centimeter. इतना की घास उग जाए लेकिन पेड़ नहीं. ठीक है. Heaviest rain comes in June and July. Most of the winter months have about 2.5 centimeter of precipitation, matlab hardly any rain in winter, brought by occasional depression of the westerlies and coming in the form of snow. The maritime influence in the southern hemisphere causes more rainfall. So eventually, most of the rainfall is happening due to the ocean. Okay, sea breeze, land breeze की वजह से. Now Chinook, so this is the local wind in the steppe region. So on the eastern slope of the Rockies in Canada and USA, a local wind similar to Fawn in Switzerland called the Chinook, so comes in southwesterly direction to the prairies and has a considerable effect on the local pastures. It actually comes with the depression in the winter or early spring from the Pacific coast, ascending the Rockies and then descending to the prairies. So that is the katabatic wind, जो mountain से नीचे की तरफ आ रहा है. It is a hot wind and may raise the temperature by 5 degrees Celsius within a matter of 20 minutes. That's why it is called the snow eater.
तो बेसिकली जो स्नो से ग्रासलैंड जम रखा होता है उसको पिघलाने में हेल्प करती है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज ग्रासलैंड्स. ठीक है. सो रॉकी माउंटेन से डाउनवर्ड की तरफ चलेगी और इस पूरे एरिया में जो स्नो कवर्ड ग्रासलैंड है वो स्नो को मेल्ट अवे करने में हेल्प करेगा. दैट इज द पर्पस ऑफ चिनूक. ओके. तो चिनूक का एक सिमिलर एस्पेक्ट है फॉन इन स्विट्जरलैंड. Then natural vegetation. Mainly there are grasses. So it's treeless and grasses are much shorter. They are nutritious. See, short grass is nutritious. Tall grass is not. Short grasses can be used as a fodder by the livestock. Tall grasses cannot be. Okay. So now this is the typical grass of the wheatlands of North America. The rich black earth or Chernozem areas of Russian Ukraine. आजकल ये बहुत न्यूज में चल रहा है. And the better watered areas of the Asiatic steppes. So mainly that's the kind of grass that is happening. So grasses are not only short but also wiry and sparse. So these areas are less suitable for arable farming and are used in the form of ranching as in high plains of USA. So basically livestock farming के लिए use होता है. Basic farming जो wheat, rice ये सब cultivation करना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है. Then animals, so they don't have much animal diversity. Horse is the common animal in the Asian steppes. Then cultivation was unknown just before a century, and the region was one of the most sparsely populated areas in the world. So in recent years, the grasslands have been plowed up with the extensive mechanized wheat cultivation and are now greeneries of world. Prairies को बोला जाता है. अब तो बेसिकली ना जो एरिया है वो तो हमेशा के लिए फर्टाइल होता है, चाहे आप जहां पे भी कल्टीवेशन कर लीजिए. फॉर एग्जांपल राजस्थान में भी अगर आप कल्टीवेशन करना चाहें, बहुत अच्छी सॉइल. प्रॉब्लम पानी की है. तो एक बार आप सारे फैक्टर्स पूरा करना शुरू कर देंगे तो फिर ठीक ठाक कल्टीवेशन हो जाती है. तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम मैकेनाइजेशन की लैग की थी, क्योंकि ज्यादातर ये एरिया में कोई लोग रह ही नहीं रहे. जब मैकेनाइजेशन स्ट्रांग होना शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो गया. Yeah. So right now wheat and maize, that's the two main crops that is happening here. Ranching, so right now you got cattle and sheep rearing going on here, and this leads to ranching regions of the world being created in the steppe grasslands. Nomadic herdsmen यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे किर्गिज एंड खजाक्स. तो ये दो nomadic herdsmen हैं. Kyrgyz, so it's a tough and fearless people, and they long resisted the subjugation by the Russians. So now, however, under the communist regime, they are being forced to settle down. So that's still going on in Kyrgyzstan. Then extensive cultivation of wheat in a mechanized form. Let's see what is happening here. The temperate grasslands are ideal for extensive wheat cultivation. The levelness of the steppes and the other temperate grasslands all over the world make plowing and harvesting a comparatively easier job. सीधे सपाट ग्राउंड है, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, घास लगी हुई है, उसको लेवल करो और wheat उगाओ. In the prairies, the Argentinian pampas and the Ukrainian steppes, the downs of Australia, agriculture is now completely mechanized. In fact, in Australia, so I've seen it is so mechanized, even tractors work with GPS. You don't have to drive them manually now anymore. Robotic control of tractor is now on. सुबह चला के छोड़ देते हैं. और farmland भी इतने लंबे चौड़े हैं because land is very cheap there. Very few people do agriculture. So mostly Indians they sell their lands here in Punjab and Haryana and then they go off to Australia. अगर वो यहाँ से 10 एकड़ बेच के जाएंगे, वहां पे 100 खरीद लेंगे. फिर उन 100 एकड़ के अंदर वहां पे फार्मिंग करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत चीजें फ्री मिलती है. आपको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में कैपिटल सब्सिडी मिलती है, आपको सीड में सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर में, जैसे यहाँ पे वैसे ही वहां पे. ठीक है, सब्सिडीज मिलती हैं. तो उसके बाद उनका जो मार्केटिंग चेन है वो बहुत अच्छा है. Whatever you produce, companies directly pick from the farm. और वो इससे फ्रॉम द फार्म, यू नो, वहां पे फार्म टू फोक, इस चीज की कॉमर्स बहुत अच्छी है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी है. इस वजह से वो फार्मर को कुछ नहीं करना अपनी फसल उगाने के बाद, अपने आप कंपनीज आएंगे, उनके खुद के वॉशर प्लांट्स ये वो सब लगे हुए हैं, तो वो आपका हार्वेस्ट कलेक्ट करके प्रोसेस करके प्राइमरी फार्म के ऊपर ही और ले जाएंगे. So then that's their job to sell it in the farmers market or wherever the market they want to sell it.
and there are big farmer producer organizations, so you don't have poor farmers in Australia for that matter. So many people take to farming in Australia. Okay. Now, what kind of grassland is supporting what kind of economic activity? So this is also one of the question areas in UPSC prelims. So prairies are extensive ranching and wheat granaries of the world. So they are known for that. Pustas, so this is in rich black soil. So जहाँ पे भी black soil होगा तो cotton की farming बहुत अच्छा हो सकता है. Wheat production is there. Sugar from sugar beet. Instead of sugar cane, they have sugar beet. Okay. So the name of the plant is Beta vulgaris. Then countries like Hungary, Ukraine, and Romania, they are known for that. Pustas. Then pampas. So they are in alfalfa. यहाँ पे nutrient rich grass होता है. So this is very good for dairy production. Extensive wheat production everywhere in all the grasslands these days. Downs and Canterbury, so sheep and cattle rearing. Merino wool जो है वो यहाँ पे production होता है Downs और Canterbury के अंदर. Then velds, so they are maize farms and sheep and cattle rearing again. So livestock और wheat ये दो तो हर जगह ही हो जाते हैं जहां जहां पे आपके पास मेनली ग्रासलैंड्स हैं. कहीं कहीं पे आपको एक्सटेंसिव रैंचिंग या कुछ अलग से कुछ फैक्टर मिलेंगे, बाकी सब तो सेम ही. Okay. Now moving on, let's have a little look at these savanna grasslands and steppe grasslands, how they look like. So this is South America. So in South America, you got the Patagonia Desert here, the Atacama Desert over here. These are the grasslands now. Andes Mountains हैं, Llanos, Selvas, Pampas. तो ये तीन तरह के grasslands आपको मिल जाएंगे. तो बस इस तरह से इसको कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने जैसा क्वेश्चन आता है. Llanos, Selvas, Gran Chaco is just a region, and then the Pampas is the grassland. Okay. तो ये तीनों का नाम याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ. देन वेस्टर्न स्टेपे और ईस्टर्न स्टेपे. तो ये पूरा एक बेल्ट है यहाँ से यहाँ तक ग्रासलैंड. Okay. Now the Mediterranean climate, the third type, this is called warm temperate or western margin climate or warm temperate west coast climate. So where is it? Let's first have an understanding of that. So this is between 30 and 45 degree north and south of the equator. The basic cause of this type of climate is the shifting of the wind belts. And this is the climate where there is winter rain, which is happening. And Mediterranean Sea has the greatest extent to this type of climate. Mediterranean Sea की वजह से Mediterranean type of climate का नाम भी पड़ा है. जहां पे भी Mediterranean type of climate आए, एक चीज याद रखनी है, winter rain. तो ये उसका एक typical feature है. The best developed form of this climate is found in central Chile. So let's look at the Mediterranean type of climate. So this is the Mediterranean Sea right here. Okay. और इसके in and around आपको Mediterranean climate जो है वो सबसे best मिलेगा. इसके अलावा छोटे छोटे मार्जिन्स के ऊपर आपको साउथ में और इधर Mediterranean climate मिलेगा. 40 degree is the line that you can cut out for the Mediterranean type of climate. Okay. Let's see. Other regions क्या है? California, southwestern tip of Africa, that's the Cape Town, and southern Australia and southwest Australia. So Adelaide के आसपास की जगह. So what is the feature? So here the precipitation is 35 to 90 centimeters, somewhere near the grassland वाला temperature precipitation, ज़्यादा नहीं. But यहाँ पे है क्या? Steppes में आपको summer rain मिल रहा है in the months of June and July. Yes or no? विंटर में हार्डली 2 सेंटीमीटर और वो भी स्नो के फॉर्म में. यहाँ पे आपको विंटर रेन मिलेगा. सो टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा. टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस बट ग्रेटर देन -3 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे -18 से -3 ये लिखना. क्लाइमेट इज नॉट एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ कूलिंग फ्रॉम द वाटर बॉडीज. सो that's the reason that it does not go very hot or neither very cold. जब भी Mediterranean Sea या ocean पास में रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ एक balancing effect तो रहता ही है land breeze, sea breeze की वजह से. So a dry warm summer with offshore trade winds.
So that is one feature of the Mediterranean climate. Okay. So what is happening? In summer, when the sun is overhead at the Tropic of Cancer, the belt of influence of the westerlies is shifted little bit towards the pole. हमने पढ़ा था कि जो सारी प्रेशर बेल्ट्स हैं ये समर के टाइम पे थोड़ा सा नॉर्दर्न शिफ्ट मारेंगे, जैसे हम पूरी ITCZ का फिनोमेना देख रहे थे. विंटर्स के टाइम पे सदर्न शिफ्ट करते हैं. ठीक है. So rain-bearing winds are therefore not likely to reach the Mediterranean lands. The prevailing trade winds, that is the tropical easterlies, are offshore and there is practically no rain. So strong winds from the inland desert region pose the risk of wildfires. So that's what's happening in the summer months. So इधर से wind आ रहा है, जो थोड़ा बहुत आ रहा है, so it's not much. Westerlies का भी region यहाँ पे यहाँ नहीं influence create कर रहा, होना चाहिए था जहाँ पे it's little bit towards the north. Okay? So that's the situation here with the westerlies. So therefore there is nothing happening here right now. जो westerlies इधर flow करनी चाहिए थी वो अभी थोड़ा सा ऊपर है उनकी belt. Okay. Then rainfall in winter with onshore westerlies. अब winters के time पे क्या पढ़ा था हमने कि नीचे को shift हो जाएंगे, तो यही westerlies अब यहाँ पे rainfall create करेंगे in the winter. Okay. But winter में एक चीज और भी तो देखिए कि जो moisture load है वो हवा का कम हो जाएगा, कि जो गर्म हवा है वो ज्यादा moisture carry कर सकता है, ठंडी हवा कम moisture carry करेगा, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है, राइट. सो इस वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर भी कम होगा विंटर के टाइम पे तो बारिश उतनी ज्यादा नहीं हो रही. इट इज विद इन द रेंज ऑफ 35 to 90 सेंटीमीटर ओनली. या सो precipitation in winter when westerly shifts equatorward. In the northern hemisphere, the prevailing onshore westerlies bring much cyclonic rain from the Atlantic. The rain comes in heavy showers and only on a few days with bright sunny periods between them. This is another characteristic feature of the Mediterranean winter rain. Though the downpours are infrequent, they are often very torrential, and in the mountainous district, there are destructive floods which happen during the rain. देखो एक चीज समझो, जहां पे आमतौर पे बारिश नहीं आती तो वो वाला लैंड मास बारिश के लिए तैयार भी नहीं. जहां पे हर रोज बारिश होगी वो लैंड मास बारिश के लिए तैयार भी है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आमतौर पे नॉनवेज खा रहे हो तो फिर आपकी स्टमक नॉनवेज के लिए तैयार भी, अगर आमतौर पे नहीं खा रहे तो फिर तैयार भी नहीं, है ना. इसी तरह से तो कुछ ऐसे एरियाज जहां पे कभी बारिश होनी है, विंटर्स में थोड़े से दिन के लिए कभी बारिश होगा, तो जब भी बारिश होगा उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है, फिर लैंड मास इज नेवर रेडी फॉर इट. जहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही है तो देयर द लैंड मास विल बिकम सेटल्ड, पीपल विल बिकम सेटल्ड अकॉर्डिंगली. ओके, so that's the situation. So let's look at some of the Mediterranean countries, how the rainfall is happening here. So if you look at the January, Feb, March, April, May, June and July. So Rome के अंदर जून जुलाई में बारिश हो रही है. Perth, this is Australia. So यहाँ पे Jan, Feb में ज्यादा बारिश हो रही है. Cape Town again Jan, Feb, and then San Francisco. So again you got somewhere near September, October rainfall. तो सब जगह के अपने अपने फीचर्स हैं. ठीक है. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बेस्ट कहाँ बिल्टअप है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास बिल्टअप. तो यहाँ पे ये फॉर्म ज्यादा आएगा, बाकी जगह पे इट कैन बी अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आल्सो. चलिए आगे देखते हैं. सो लोकल विंड्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत प्रीलिम्स में यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी लोकल विंड्स हैं, ये सारी लोकल विंड्स हैं जो आप देख रहे हो. ठीक है. So one is Sirocco. This is very famous. So this is a hot, dry, dusty wind which originates in the Sahara Desert. एक चीज देख लो बेसिक सी, कि जो नीचे से विंड आ रही है वो हॉट, ड्राई और डस्टी होने वाली, जो ऊपर पोलर रीजन नॉर्थ से आ रही है वो कोल्ड होने वाली. फॉर एग्जाम्पल मिस्ट्राल, बोरा, दे आर कोल्ड. सिरोक्को इज हॉट. ओके, फिर आगे देखिए. The Sirocco blows outwardly in southerly direction, south to north, from the desert interiors to the cooler Mediterranean Sea. After crossing the Mediterranean Sea, Sirocco is slightly cooled by the absorption of water vapor. Its scorching heat withers vegetation and crops. Sara moisture उठा लेती है. This may be blood rain because the wind is carrying the red dust from the Sahara Desert. तो यहाँ से सहारा डेजर्ट से रेड डस्ट पिक करता है, इधर से मॉइस्चर पिक करता है,
और इधर जाके ब्लड रेन जिसको बोलते हैं तो वो क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ द रेड डस्ट दैट इट कैरीज. Then next is Mistral. So this is the cold wind coming from the north, rushing down the Rhone Valley in the violent gust of 40 to 80 miles per hour. The velocity of Mistral is intensified by the funneling effect. Funneling effect किसकी वजह से? इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, तो इन दोनों के बीच में से विंड निकल के जाता है, इस वजह से वेलोसिटी बढ़ जाता है. ऊपर दोनों जगह पे एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एयर पैकेट होंगे, ठीक है. उसकी वजह से द विंड विच इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन दैट गेट्स स्पीडेड अप, जैसे जेट स्ट्रीम्स होते हैं इन दी हैडली सेल एंड फेरल सेल, है ना, एंड फेरल सेल एंड पोलर सेल, उन दोनों के बीच में से निकलते हुए जेट स्ट्रीम्स जब जाएंगे, so they will also become high speed air packets in the 20-25 किलोमीटर altitude. यहाँ पे मिस्ट्रल जो है वो हाई स्पीड हो रहा है लोकल कंडीशंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द हाई एंड लो belts here. So that's the situation with Mistral. So a similar type of cold northeasterly wind along the Adriatic coast is called Bora. तो ये भी Mistral जैसा ही northern hemisphere से आ रहा है. Then Tramontane and Grigale are similar cold winds in the Mediterranean Sea. तो जितना ये ऊपर से आ रही हैं ये cold winds हैं, जो नीचे से जा रही हैं ये hot winds हैं. Khamsin is another hot wind that is happening here. Okay. चलिए आगे देखते हैं. Natural vegetation. So there are small broad leaves and the trees are never very tall. Obviously यहाँ पे बारिश है लेकिन उतनी नहीं है. Absence of shade is a distinct feature of the Mediterranean land. Most of the plants are again xerophytic, drought resistance, cactus जैसे plants यहाँ पे भी होने वाले. ऐसा है कुछ Mediterranean landscape. छोटे-छोटे trees. Okay. Now Mediterranean evergreen forests. So these are open woodlands with evergreen oaks, and they are found only in climatically most favored regions. So the cork oaks are especially valued for their thick barks, and they are used to make wine bottle corks. They are exported around the world. In Australia, eucalyptus forest replaced the evergreen oak. Australia की ये famous है. The giant redwoods is a typical Californian tree. So redwoods are very tall trees in California, so they are the example. So Mediterranean evergreen forest के जो ये trees हैं, ये अपने आप में prelims का question बनाते हैं. Cork oaks, okay, that is one. Second is Australian eucalyptus and Californian redwoods. ये अपने आप में important है. Then evergreen coniferous trees. So there are pines, firs, and cedars. ये तीन तरह के coniferous trees यहाँ पे मिलेंगे. Then there are bushes and shrubs, grass. So they do not suit any type of what you can say livestock ranching or anything like that. Okay. So even if the grasses do survive, they are so wiry and bunchy, they're not suitable for animal farming. So cattle rearing is thus not important for Mediterranean people. There is a lot of orchard farming that happens here. It's called world's orchard lands. Citrus fruits, vines, that's what they create. Grape, lemon, oranges, ये सब यहाँ पे होता है. Olive tree is the most typical of all Mediterraneanly cultivated vegetations here. So जितना भी citrus export होता है, उसका 70% कम से कम जो है Mediterranean area से आ रहा है. Okay. So that's what's happening here. Olives, chestnuts, hazelnuts, walnuts, chocolate industry के बहुत सारे जो nuts हैं वो सारे यहाँ से आएंगे. Okay. Wheat is the leading food crop. Barley is the next important cereal. So transhumanes is widely practiced. So that is moving up and down the hill in search of pastures according to season. So किसी season में आपको ऊपर मिल के दे दे. And this is viticulture, is the by tradition a Mediterranean occupation, that is wine production. तो बहुत सारी जो वर्ल्ड की वाइन्स हैं वो यहाँ पे बनती हैं. 3/4 of the world's production of wine happens here. 85% of the grapes in the world are produced here and they go into wine. And that's that. Then they are the net exporters of the citric fruit and net importers of dairy product, क्योंकि livestock तो यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है. Then a lot of tourism happens in the Mediterranean countries. Then that's that in the Mediterranean type of climate that you need to study. Next is the warm, temperate eastern margin climate.
अभी आप कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे देख रहे थे किस तरह का क्लाइमेट है, दैट इज द मेडिटेरेनियन टाइप, स्पेशली अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। अब वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन देख रहे हैं। ईस्टर्न मार्जिन में हमारे पास एक है चाइना, एक है गल्फ और एक है नेटल। तीन तरह की कैटेगरीज हैं। दे आर ऑल बिलोंगिंग टू 20 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर्स। तो लेट्स हैव अ लुक कि ये कहाँ पे है। दिस इज द गल्फ टाइप, नेटल टाइप, चाइना टाइप, नेटल टाइप, इस तरह से। ठीक है, सो सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास एक ही है नेटल टाइप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो है, गल्फ टाइप एंड चाइना टाइप। चाइना वाला को नाम अलग से दे दिया चाइना टाइप, लेकिन वो एक्सटेंड कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहा है चाइना टाइप। चलिए देखते हैं क्या टिपिकल फीचर्स हैं। सो टेम्परेट मॉनसून और चाइना टाइप क्लाइमेट is observed in most parts of China. The climate is also observed in southern parts of Japan and northeastern India. Okay. Then Gulf type, so this is in the southeast USA. Natal type, so this is in New South Wales, Australia. Natal region of South Africa and Parag, Uruguay basin in South America. So natal type is different from the temperate monsoon or China type as it receives rainfall from onshore trade winds all year round. यहाँ पे ऑनशोर ट्रेड विंड्स की वजह से सारा साल बारिश होगा। चाइना टाइप में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट मींस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, लेकिन उधर विंड कौन सा ब्लोइंग है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कब ब्लो करता है विंड? विंटर टाइप में। तो विंटर में यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है चाइना में। ठीक है, इनफैक्ट स्नोफॉल ही हो जाता है सेंट्रल चाइना के अंदर। गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे जो रेनफॉल है वो रहेगा। ठीक है, so that's the situation in Gulf type of climate. So how is the situation here? So it is characterized by warm, moist summers, cool, dry winters. One exception is the winters are also moist in the natal type. How is the temperature? 4 to 25 degrees Celsius, modified by maritime influence. Occasionally, the penetration of cold air, that is due to the polar vortex, from the continental interior may bring down temperature to the freezing point. China में कई बार बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। Though frosts are rare, they occasionally occur in the cold interiors. How is the rainfall? 60 to 150 centimeter. Very densely populated areas. Fairly uniform rainfall throughout the year. थोड़ा होता रहेगा. In summer, the regions are under the influence of moist maritime airflow from subtropical anticyclonic cells. Local storms, for example, typhoons and hurricanes also occur. Okay? So it's called typhoons and hurricanes in this area. So this is the situation. So China type में क्या हो रहा है? There is temperate monsoonal type of climate. Okay. Gulf type में क्या है? Slightly monsoonal and natal is non-monsoonal. That means there is no reversal of wind or anything going on in natal areas. Okay. So China type के summer के अंदर कैसा होगा? Intense heating within the interiors sets up a region of low pressure in the summer, attracting the tropical Pacific air stream, that is the southeast monsoon. The monsoon does not burst as suddenly nor pour heavily as India. So typhoons are mostly in late summer from July to September. Winter कैसे? Intense pressure over Siberia and continental polar air streams flow outward as northwest monsoon. So bitterly cold and very dry. Little rain but considerable snow on widespread slopes. Another climatic feature associated with China type of climate is southern China is the occurrence of typhoons. तो ये सब चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है इधर इन दिस रीजन। ठीक है, तो इनके फीचर्स याद रखने। चाइना टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटल टाइप में बस ये याद रखना कि मॉनसूनल नहीं है, सारा साल बारिश होती है। ओके, गल्फ टाइप नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इन दोनों के बीच के एक एस्पेक्ट है सिर्फ। नेटल टाइप सो eliminates the monsoon elements because the narrowness of the continents, the dominance of the maritime influence. तो यहाँ पे mainly maritime influence है, sea breeze, land breeze ही चलनी। Southeast trade winds bring about a more even distribution of rainfall throughout the year, supports luxuriant vegetation. तो hardwoods भी हैं, softwoods भी हैं, agriculture भी है, सब है। Timber, so यहाँ पे
एक मेन एस्पेक्ट है. So the forests of China and southern Japan have considerable economic value, include oak, camphor, and so on. So in South America, you look at Brazil, Eastern Parag, Argentina, and so on. So there is a particular type of wood that's called quebracho. This is the axe breaker, extremely hard wood, which is used for tanning. Okay? So quebracho, इसका नाम याद रखना. ये 6th class की NCERT में भी लिखा हुआ. Eastern Australia has eucalyptus forest, पढ़ लिया हमने. There's natal palm in natal Africa. Then there is Gulf states of USA have lowland deciduous forests. So major cropping pattern in China, there is rice, tea, and mulberries. Sericulture अब ज़्यादा नहीं है, नहीं तो Chinese silk और silk root ये famous होते थे. Southeastern USA, so there is widespread cultivation of maize and cotton in corn and cotton belts of USA. तो ज़्यादातर आपको cornflakes से याद रख लेना चाहिए. Then natal South Africa, so this is known for sugarcane. South America is known for coffee and maize. So these are the major cropping patterns here. Okay. Then इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. Moving on. What kind of crop requires what kind of aspects? We don't need it. Tobacco थोड़ा सा चाहिए. So tobacco is native to America. There is Virginia tobacco is famous. So this is a variety of America. The humid atmosphere, warmth, and well-drained soils of the Gulf states enable tobacco to be successfully cultivated in many eastern states of USA. No less than half of the tobacco that enters international trade comes from the USA. So that's one of the major industries in USA, tobacco. Then that's that. Nothing much. एक इसमें जो अब next important type of climate है, that is the British type of climate. ये भी अपने आप में एक अलग एस्पेक्ट कैरी करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद है गल्फ स्ट्रीम इधर जा रही थी. इसकी वजह से ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में अपनी एक एस्पेक्ट है. देखते हैं. So the cool temperate western margins are under the influence of westerlies all around the year. तो यहाँ पे wind तो westerlies है हर टाइम पे. ठीक है. So they are the regions of the frontal cyclones or temperate cyclonic activity. So this type of climate is called as British type. So Britain में ही होता है typically, तो इसलिए British type of climate बोलते हैं. So also called as Northwestern European maritime climate or the Great Oceanic Influence. So Greater Oceanic Influence क्यों है? हमने पढ़ रखा है ocean current की वजह से, warm ocean current. So most pronounced in Europe, in and around Britain. So let's see. In North America also it happens a little bit here. But it's very confined. It's confined mainly to the coastlands of the British Columbia in high Rocky Mountains. So let's see what are the features of British type of climate. So moderately warm summers and fairly mild winters. Rainfall occurs throughout the year with the winter maxima. So winter maxima and rainfall is in British type of climate. ज़्यादातर बारिश जो है सर्दियों में होगी. Now the mean annual temperatures are usually 5 to 15 degrees Celsius. Winters are abnormally mild. It's not that it will be too cold. It will remain between 5 to 15 degrees Celsius only. Okay. So why they are mild? So that's because of the warming effect of the North Atlantic drift. That's why they are mild. Sometimes unusual cold spells are there because of the cold polar air which comes to the interior. यहाँ से jet stream के साथ साथ cold polar air आ सकती है. Rossby waves बोलते हैं. हमने पढ़ा इस तरह से. उनके साथ साथ कभी कभी जो पोलर एरिया से हवा ठंडी यहाँ पे पहुंच जाते हैं उसकी वजह से कभी हो सकता है कि there is like a snow kind of a thing which happens, but that's very rare. Okay. So precipitation. So there is adequate precipitation or rainfall throughout the year. In the winters, it happens due to frontal cyclones most of the time. Okay. So relief can make great differences in the annual amount. This is particularly significant in New Zealand, where the western margins are subject to heavy orographic rainfall, where the eastern Canterbury plains receive comparatively less rainfall due to the rain shadow effect. So western margins हैं, यहाँ पे mountain area है पूरा, ठीक है, और इस mountain के पीछे इधर वाले Canterbury plains के अंदर कुछ भी बारिश नहीं है और इधर बहुत बारिश है west coast के अंदर. That's how New Zealand is. Because ये जो climate है आपको इधर मिल रहा है, ठीक है.
There is British type of climate in this area, New Zealand, entirely. So entire New Zealand and Britain. So they have this British type of climate. Okay. Now what happens here? So there are 4 distinct seasons which are happening. Okay. So winter is the season of cloudy skies, foggy, misty mornings, and many rainy days from the passing depressions. Spring is the driest and the most refreshing season when people emerge from the depressing winter to see everything become green again. So this is followed by long sunny summers. Then next is the autumn with the roar of gusty winds and cycle repeat itself. So that's how you get all the seasons here. So there's summer, autumn, spring, and winter. Okay. So no need to go into the climate graphs. What is the natural vegetation? So there is a deciduous forest. So trees will shed leaves during the summer. Yeah. So the trees shed their leaves in the cold season, winter. Sorry. So shedding begins in the autumn. That's called the fall season. Fall, winter. है ना? तो कई बार आप कोई अच्छी मार्क्स एंड स्पेंसर टाइप शॉप पे जाओगे तो लिखेंगे फॉल विंटर कलेक्शन. Yeah. Okay. So here, moving on, higher up in the mountains, in the Scandinavian highlands or the Rockies and southern Andes and so on, so deciduous trees are generally replaced by the conifers. तो वहाँ पे mountain vegetation हमेशा अलग रहेगा. Okay, ये याद रखना. Economy कैसा है? Lumbering is quite profitable because of the deciduous trees. So there are pure stands. आराम से आप lumbering कर सकते हो. Mixed cultivation नहीं है. Then easy penetration means much cost can be saved in the movement of the logs. The deciduous hardwoods are excellent both for fuel and industry. The temperate eucalyptus in Tasmania are also extensively felled for the lumbering industry. Conifer softwood is used for paper and pulp industry. So that's the aspect. Industrialization सबसे पहले हुआ ही यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर. So बाकी दुनिया में तो बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर आया. So Britain, France, and Germany have significant mineral resources and are heavily industrialized. Ruhr region in Germany, Yorkshire, Manchester, Liverpool, so regions in Britain. So they are significant for wide-ranging manufacturing industry. So automobile industry is the most significant here. For example, Berlin Motor Works, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, everything German cars. Now, if you go to Korea, South Korea. So even everything is Samsung and LG in South Korea. Even the cars are Samsung now. तो हमने और कहीं तो नहीं देखा, लेकिन साउथ कोरिया के अंदर कार्स भी सैमसंग. Now Tasmania is the important merino wool production area. ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होता है, इधर भी है. तो Tasmania बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जुड़ा हुआ है. Wool produced here is exported for the textile factories in England, Japan, and China. Australian economy is still pretty much least industrialized kind of an economy. ज्यादातर चीजें वहां पे इंपोर्ट ही होती हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट है वहां पे, थोड़ा बहुत फूड इंडस्ट्री है, बस बहुत कम वहां पे मेन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. ओके. Then a large range of cereals, etc., fruits are happening here. Market gardening happens, so not very important from the prelims or mains point of view. Mixed farming happens. So wheat is now a net import item in Europe. So खास कुछ grow नहीं करते. Then yeah. So next most important cereal that is here is barley. So whiskey distilling industries बहुत हैं, उसके ऊपर बहुत काम करते हैं. European breweries are an important destination center. Then dairy is intensively practiced at most of the places. Milk is converted to cream, which is less perishable than fresh milk and is exported all over the world. Then nothing much, यहाँ से कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है, इस तरह की उनकी इकोनॉमी चल रही है. So here, Britain was one of the once an exporter of the wool, but now it imports wool from Australia. And but today, only British pedigree animals, the newer sheep lands of the world, Australia, so वही सिर्फ export होता है. Then in southern hemisphere, sheep rearing is the chief occupation of the New Zealand. So with its greatest concentration in Canterbury Plains, so that's the rain shadow region. So it is estimated that for every New Zealander, so there are about 20 sheep.
तो मेरिनो वूल की प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है. Okay, moving on. So that's important part from the British type of climate. Then there is the taiga climate or the boreal climate. तो बोरियोलिस यहाँ पे जो है वो आपको ऑरोरा इन द स्काई, ग्रीन स्काईज जो दिखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे बोरल फॉरेस्ट के ऊपर. पोलर रीजन के आसपास चला गया. ठीक है, तो उसका नाम देख लीजिए, बोरियल क्लाइमेट, टाइगा क्लाइमेट, साइबेरियन क्लाइमेट, cool temperate continental climate or continental subpolar climate. So we are moving towards colder and colder, yeah, starting from equator. So this is found only in northern hemisphere and not in the southern hemisphere. ध्यान से एक चीज देख लीजिए, क्यों? क्योंकि इधर कॉन्टिनेंटैलिटी है, इधर इस पर्टिकुलर लेवल पे कॉन्टिनेंटैलिटी है ही नहीं, तो होना कहाँ था? ठीक है, so it is experienced in the regions just below the Arctic Circle, and on its poleward side it merges into the Arctic tundra and the climate fades into the steppe climate. Ultimately इसके बाद तो फिर polar climate ही होने वाला. Okay, so where is it? So it's in central Canada, Scandinavian Europe, central and southern Russia. So it is in the 50 to 70 degree north latitude, not there in south latitude. So that's another feature in itself. Okay, so absent in the southern hemisphere. Why? Because of the strong oceanic influence, it reduces the severity of the winter in the southern hemisphere. How does it look like? This is the winter, this is the summer. Okay. So it is found only on the mountainous upland of the southern Chile, New Zealand, Tasmania, Southeast Australia. उधर आपको थोड़े बहुत coniferous forest मिल जाएंगे. That is taiga type of vegetation, but not the taiga type of climate. ठंड नहीं इतनी ज़्यादा होती. So how is the temperature? So summers are brief and warm, reaching 20 to 25 degrees Celsius, whereas winters are long and brutally cold, so minus 30 to 40 degrees Celsius. आप पानी बॉयल करके हवा में मारिए, नीचे बर्फ ही आने वाली है, पानी भी नहीं आएगा. ठीक है, so that's how the situation is. Annual temperature range of the Siberian climate is the greatest, so that's the 50 to 60 degrees Celsius. कहने का मतलब जो summers में और winters में टेम्परेचर का गैप है वो कितना है? सो साइबेरिया के अंदर 50-60 डिग्री का गैप पड़ जाता है कि 10 डिग्री समर्स में हो गया और -50 डिग्री के आसपास वो चला जाएगा विंटर्स में. दैट्स द गैप दे आर टॉकिंग अबाउट. सो देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस, इट्स कॉल्ड वर्क्योन्स. ओके, सो दिस इज इन साइबेरिया. तो यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड, दैट इज -67 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दैट मीन्स इफ योर स्किन इज एक्सपोज्ड इट विल फ्रीज. सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं. Moment you are exposing, you are getting the frostbite. Okay, so in Northern America, the extremes are less severe because of the continent's lesser east-west stretch. So all over Russia, nearly all the rivers are frozen. In normal years, Volga is covered, ice covered for about 150 days. So that's the Russian river. Now, occasionally cold northerly polar local winds such as blizzards of Canada and buran of Eurasia blow violently. So local winds and blizzards or buran. Okay. Permafrost. So this is a thick subsurface layer of soil that remains below freezing point throughout the year, are generally absent as snow is a poor conductor of heat and protects the ground from severe cold above. परमाफ्रॉस्ट यहाँ नहीं होता, परमाफ्रॉस्ट पोलर एरियाज में. रशिया में है परमाफ्रॉस्ट, लेकिन थोड़े और ऊपर रशिया में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा. So upper Russia, here you will find the permafrost. Railways or navigation lines यहाँ पे बना रखे हैं इन्होंने. Okay. Now precipitation. So maritime influence in the interior is absent, obviously. कि interior जो है वो wide ही बहुत है. थोड़ा बहुत maritime influence होगा तो coastal areas तक ही रह जाएगा, नहीं तो continentality बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो there is no balancing effect by the ocean present here. So it is a well-distributed precipitation, 38 to 63 centimeter with a summer maximum. So most of the rainfall will happen in summers. In winter, the precipitation is in the form of snow, as the mean temperatures are well below the freezing point all of the time. Natural vegetation, so you got the evergreen coniferous forest here. That is the predominant one. The greatest single band of coniferous forest is in taiga in Siberia. Taiga is a Russian word for coniferous forest. Then in Europe, countries that have similar type of climate, so they are Sweden and Finland. यहाँ पे भी ज़्यादा ठंडी रहने वाली है. In North America, so
There is a small amount of natural coniferous forest, so that's happening in Alaska, Canada, and going into the Labrador. Then softwood trees. So the coniferous forest belt in the Eurasia and North America are the richest source of softwood, जहाँ से paper मिलता है. Okay. Okay. So softwood is used in paper, matchmaking, pulp making industry. So the world's greatest softwood producers are Russia, US, Canada, and the Finno-Canadians or Finno-Canadian countries. These are Finland, Norway, and Sweden. ये word इसी से बना है. Finn, then no for Norway, and Scandinavian or Sweden. So इतना याद रख लेना. Finno-Canadian किसको बोलते हैं? Finland, Norway, and Sweden. Okay, so that's that. So almost all conifers are evergreen. There is no annual replacement of new leaves as in the deciduous forest. So evergreen or deciduous में फर्क ही है कि one will shed the leaves and the other will not. Now, the leaves are small, thick, leathery, needle-shaped to check excessive transpiration क्योंकि बारिश तो कम ही हो रही है इस वजह से. Soils are very poor. They are excessively leached and very acidic. Humus content is also low because leaf shedding तो हो नहीं रहा, तो humus content कहाँ से है? Absence of direct sunlight and short duration of summer are another contributory factors. So they are also found in the regions with high elevation. जैसे इंडिया में भी आपको पाइन ट्रीज हिमालयस में जाके मिल जाते हैं, तो वही यहाँ पे भी, ठीक है, सारा साल ग्रीन रहते हैं. Then इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? कुछ खास नहीं है. एग्रीकल्चर भी कुछ खास नहीं होता. हंटिंग पे थोड़े बहुत बंदे सर्वाइव कर रहे हैं या माइनिंग वगैरह चल रहा है. ठीक है, सो दे ट्रैप द फरी एनिमल्स. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी. वुड काट के काम का चलेगा. So there is industry related to wood, paper industry, pulp industry, fuel industry, and so on. Okay, so that's the most aspect that is happening here. Then remaining types of climate we have. So there is Laurentian climate. This is the cool temperate eastern margin. अभी हमने जो देखा वो था इधर पूरे लैंड के अंदर. ठीक है, अभी लॉरेंशियन टाइप में इधर लॉरेंशियन करंट है, उसके हिसाब से देखते हैं. So Laurentian type of climate is found only in two regions, and that too only in northern hemisphere. There's another one. So one is in North America. So that's in the Newfoundland. And Newfoundland is known as the greatest fishery of the world. Why? Because it is the meeting point of the cold current and the warm current. इसकी वजह से this Newfoundland is called the greatest fishing ground in the world. Then the Asiatic region के अंदर ये कहाँ मिलेगा? Siberia, North China, Manchuria, Korea, and North Japan. So over this place. Okay. So it's absent in southern hemisphere. Now what is happening here? So it is characterized by cold, dry winters and warm, wet summers. Winter type temperature is below freezing point and snowfall is quite natural. So that's what is happening here. Precipitation कितना है? काफी अच्छा precipitation है. 75 to 150 centimeter. And most of the rain is in the summer. Dry westerlies that brew from the continental interior dominate the winters. That's the situation. Summer में wind easterly है, तो इस टाइम पे अच्छी बारिश हो जाएगी. वेस्टर्ली विंड से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो पूरा मार्जिन कवर करके फिर आपके पास पहुंचेगी. This is the Newfoundland. Like I was saying that there is a mixing of the cold and the warm current. So this cold Labrador current meets with the warm Gulf Stream. So that's where the island of Newfoundland, तो यहाँ पे अच्छी खासे फिशरी ग्राउंड्स हैं. न्यूट्रिएंट मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है. Okay. So North American regions, to be in summer, the prolonged heat waves cause discomfort. So precipitation occurs all around the year due to the Atlantic Ocean and the Great Lakes. The warm Gulf Stream increases the moisture of the easterly winds, and that also leads to a lot of rainfall here. Okay. Then in the Asiatic region, so rainfall distribution in the Asiatic region is far less uniform, very dry. The rainfall regimes resemble the tropical monsoon type in India, in the Asiatic region. Okay, so southeast monsoon है हमारे यहाँ पे, जैसे southwest होता है, इधर southeast monsoon है. So thus the Laurentian type of climate in China is often described as the cool temperate monsoon climate. तो पूरा नाम इस तरह से बोल देते हैं. चाइना टाइप और इसमें बेसिक फर्क क्या है? मॉनसून उधर भी है, मॉनसून इधर भी है.
What is the difference between this and China type of climate? What do you think? China type of climate हमने बोला इधर चल रहा है. This is the Laurentian type. पढ़ोगे दोबारा रिवाइज करोगे तब इसको ध्यान से एक बार देखना कि दोनों में फर्क क्या है. ठीक है? Okay. So in China type of climate also, this is the main differentiating feature. So here also there is a warm and a cold current meeting place. So there's a warm Kuroshino current, which becomes the warm northwest current as it goes forward, and it is meeting with two cold currents, Ostos and Oyashio. तो दोनों cold currents यहाँ पे मिलते हैं. तो इधर भी हमारे पास fishing grounds बहुत अच्छे होंगे. So warm Kuroshio currents makes the climate of Japan less extreme. And the melting zone between warm Kuroshio, the south, and cold Oyashio from the north produces mist and fog, which is the second Newfoundland in Japan. Okay, यहाँ पे तो इधर भी Hokkaido, Honshu, इन सब Japanese islands के अंदर अच्छे fishing grounds हैं. So fishing replaces agriculture as the main occupation in many of the indented coastlines. Then यहाँ पे forest किस तरह का होगा? So there will be cool temperate forest, because otherwise rainfall चाहे कम है लेकिन at the same time यहाँ पे ठंड तो ज्यादातर रहेगी. Forests tend to be coniferous north of the 50° north latitude. Lumbering is a major activity here also. Okay. Then fishing off the Newfoundland. The regions of the Grand Banks of Newfoundland are the largest fishing grounds in the world. And the mixing of warm Gulf Stream and the cold Labrador currents makes the region the most productive fishing ground on the earth. Why is it like this? So fish feed on the minute marine organisms, which are called plankton. And plankton is abundantly available in the shallow waters, where they have access to both sunlight as well as nutrients. Also, cold and warm water mixing create upwelling of the cold, nutrient-rich water to the surface. And that's why the amount of plankton in the surface will increase and the fish will come after the plankton. So that's how the thing happens. Okay? There's a thriving fishing industry wherever there is meeting of warm and cold currents. Same happens in Japan also. उसी चीज की reputation है यहाँ पे. Okay. Then इसके बाद हमारे पास जो climate एक बचता है, that is tundra or polar type of climate. This is in this polar region. Okay. So this is found in the regions of North Arctic Circle and south of the Antarctic Circle. ज़्यादातर ice है और तो कुछ है नहीं इधर. So mid-winter temperature are as low as 40 to 50 degrees below freezing point. Low mean annual temperature कहने का मतलब range नहीं है कुछ खास, ठंडी रहेगी throughout the time. So lot of wind is happening. So there is a 130 miles per hour wind speed आराम से पहुंचता है, blizzards जिसको बोलते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ फीचर तो है नहीं उसको रोकने के लिए, कोई माउंटेन्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो there is ice and there is wind. That's all that is. And there is a lot of high pressure in the polar region and it's an outblowing wind. Yeah. There are no trees in tundra. Lowest forms of vegetation like mosses and lichens, so they are found here and there. थोड़े बहुत कभी जहाँ से snow melt हो गया तो उधर मिल गए. Then climatic conditions along the coastal lowlands are little favorable. तो coast पे जाके थोड़ा बहुत normalcy आ जाएगा, especially अगर warm current कहीं से interfering है तो. ठीक है. So in brief summer, the berry-bearing bushes in the Arctic flower bloom. That happens. In summer, the birds migrate north to prey on the numerous insects which emerge when the snow thaws, that is the melting away. Mammals like wolves, etc. There. Penguins live only in the Antarctic region, which is mostly under snow throughout the year. Human activity is very minimal here. Yeah. So in Greenland, North Canada, and Alaska, so they're Eskimos during winters, so they have their own compact homes, that's igloos. Yeah, that's that. अभी वहाँ पे ज़्यादातर स्टडी ही चल रहा है, साइंटिफिक एक्सपीडिशंस जाती हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक के अंदर, and that's that. So this finishes our discussion on the climate types in and around the world. ठीक है. अब इसके बाद जो NCERT में हमारा next aspect है to be worked about, that is ocean. In between there is a small यही सारे अलग अलग तरह के climates हैं जो discussed हैं. ठीक है. तो आप
एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, एक बार यहाँ से पढ़ना है, दोनों जगह से पढ़ लेना। इधर फैक्ट्स ज्यादा हैं इसलिए हमने यहाँ से कवर किए, आपको उधर एनसीईआरटी में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक क्रिस्प फॉर्म में जरूर मिल जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ना हो तो वहां से पढ़ सकते, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि इसको स्किप किया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे ज्यादातर। ओके, नाउ moving to the next important aspect, that is the water or the oceans. So today I'll just give you an overview of this, and tomorrow we'll work upon the oceans more. So first is the hydrological cycle. कैसे snow melt होके river streams, lakes, and then finally reaches to the oceans, and how the water cycle is going on. So that's the first part that we'll be covering tomorrow. Then किस तरह की relief features हैं जो वो रास्ते में rivers create करते चले जाएंगे, और ओशन साइड में रिलीफ कैसा है। तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हुए हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओशन में जो ज्यादातर काम करने वाला है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ सैलिनिटी। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट उसको समझना है, वो हमारा मेन एस्पेक्ट है इस चैप्टर में से। Then movement of ocean water is the another aspect that we'll be dealing tomorrow. That's in the form of ocean currents. हमने पढ़ा था विंड के साथ साथ ओशन का वाटर जो है वो मूव करता है या फिर अपवेलिंग होती है ना। तो अपवेलिंग के अंदर और इसमें क्या फर्क होता है, टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो सन और मून की पोजीशन के हिसाब से कैसे चेंज होता है, ओशन करंट्स किस तरह से मूव करते हैं, वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। Then that's the finishing of geography. इसके बाद जो ये वाले चैप्टर्स हैं they are related to environment and biodiversity, life on the earth, biosphere and all. ये चैप्टर्स आपने यहाँ से नहीं करने, इसके लिए पूरा एक अलग किताब है शंकर आईएएस वाला, तो वो किताब से हमने ये environment और biodiversity के चैप्टर्स पढ़ने। तो tomorrow's lecture will finish the NCERT geography for us. Okay? आज आप जो facts आपके साथ डिस्कस किए हैं उनको पढ़ो। Reason why I am covering it at a slow pace is so that you are able to revise it and remember it also. Okay? So don't think कि एक बार पढ़ लिया चल ठीक है कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ने का मेन कारण ये है कि यूपीएससी में भी इसी में से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसलिए हमने इसके ऊपर इतना टाइम लगा के चल रहे हैं। एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी और एक एनसीईआरटी हिस्ट्री, ये दो मेजर बुक्स हैं हमारे लिए। इकोनॉमी और पॉलिटी में एनसीईआरटी का उतना फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इसलिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्लीज ध्यान से रिवाइज जरूर करते जाइए, इसलिए आई एम गोइंग स्लो एंड स्टडी विद यू। फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं जो एकदम से आपके पास आते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स अ बिट स्लो इन द बिगिनिंग, क्योंकि मेरे को तो अगर मैंने अपनी पेज से कवर करना हो तो शायद मैं 2 दिन में करवा दूं, ठीक है, but we are doing it slow and steady so that you are able to remember these facts. Okay? So study them at least 2 to 3 times when we finish in our lecture, so that you are able to retain that in your memory. Okay? कोई doubts हैं आपके अगर इसमें से अभी तक के तो प्लीज पूछिए।